Hello everyone, welcome to Life Simplified and to the session today on how to transform the energy or the thoughts of fear to courage. So fear is, one of the very common energies. हर इंसान में कोई ना कोई चीज़ को लेकर के डर होता है, अलग अलग चीज़ों का डर होता है। Now जो डर या fear की जो energy होती है, whenever this fear enters into us, it actually has or makes इट ब्रिंग्स अ वेरी श्रिंकिंग इफेक्ट ऑन आवर ऑरा। यानी कि अपना जो ऑरा होता है, जो एनर्जी लेवल होता है, वो बहुत ही श्रिंक कर देता है। इसलिए आप देखेंगे हिंदी में कहा जाता है कि अरे तुम डर के भीगी बिल्ली की तरह क्यों बन गए हो। यू नो व्हाई? बिकॉज भीगी बिल्ली इट्स बेसिकली अ सेइंग। व्हाई? बिकॉज एनर्जी लेवल जो होती है वो इंसान की एकदम श्रिंक हो जाती है। सो फियर basically what I'm trying to say has a very shrinking effect on our aura and our chakras। और उसकी वजह से हम लोग जो भी करना चाह रहे हैं या ऑलरेडी जो कर रहे हैं उसमें भी हम लोग को सक्सेस नहीं मिलती है। एंड वाई? बिकॉज देर इज नो एनर्जी लेफ्ट इन साइड एंड इट इज़ लाइक यू स्ट्रगल, यू फील डिप्लीटेड, यू फील लो। दैट इज द इफेक्ट ऑफ फियर। नाउ Grandmaster Chokoksui in one of his books gives very nice ways on how we can regulate it, how we can basically come out of it, or how can we calculate or basically manage ourselves। And master gives 3 very profound questions कि next time जब भी आप fearful होंगे तो आप ये 3 सवाल अपने आप से पूछ सकते हैं। and this is a very practical way of how you can overcome fear। पहला सवाल, next time when you feel fearful या आपको कोई चीज़ का डर लग रहा है suddenly because of any situation changing, कुछ भी अगर चेंज होता है, जो भी चीज़ होती है, सडनली आपके अंदर एक डर की भावना आ रही है या फियर आ रहा है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन टू बी आस्क्ड टू योरसेल्फ दैट इज इट रियलिस्टिक और अनरियलिस्टिक। यानी कि जो चीज़ से आप डर रहे हैं, क्या वो सच में आपके साथ हो रहा है या क्या आप बस उसे इमेजिन कर रहे हैं। बहुत बार ऐसे होता है कि हमने एक न्यूज़पेपर में कहीं पर कुछ पढ़ लिया या कोई न्यूज़ देख ली या कुछ नेगेटिव खबर सुन ली हमारे फ्रेंड के घर पर या किसी और के घर पर, या किसी का एक्सीडेंट हो गया या कोई बीमार पड़ गया, एंड सडनली यू स्टार्ट फीलिंग और वंडरिंग फॉर वन मोमेंट, ओह व्हाट इफ दिस हैपेंस टू मी, or what if this happens to my child, or what if this happens to my husband or my family member। and वही चीज़ जब हम लोग विजुअलाइज करने लगते हैं तो उसी में हम लोग का ऑरा एकदम श्रिंक हो जाता है। So what would you term this fear as? This is an unrealistic fear because it is imaginary. It is not really happening। जैसे आपका बच्चा स्कूल गया है और जब वो स्कूल गया था आपने टीवी पर देख लिया कि अरे बच्चों के साथ कुछ नेगेटिव चीज़ें हो रही है स्कूल पे, और आप 2 घंटा फियर के एनर्जी में आपने बिता दिए कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा हो रहा होगा तो, मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा कुछ हो रहा होगा तो। सो ऑल दिस इज समथिंग एज unrealistic fear। Now some fears are realistic also। Now what do you mean by realistic fears? Realistic fears are the fears जो आप हमारे अंदर आते हैं when genuinely something negative is happening around us। Like for example, अगर आपके कोई family member का accident हो जाए और एक्सीडेंट हो गया उस समय आपको डर लग रहा है कि हम इसे कैसे मैनेज करें, बट देन दिस इज ऑल्सो फियर बट इट इज स्टिल रियलिस्टिक फियर। तो सबसे पहले स्टेप 1, जब भी आप फियरफुल महसूस करते हैं पहले ये अपने आप से पूछिए दैट इज इट रियलिस्टिक और इज इट अनरियलिस्टिक। अनरियलिस्टिक मतलब इमेजिनरी, आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, किसी और के साथ हो रहा है और आपको डर लग रहा है कि मेरे साथ ऐसा हो गया तो क्या होगा। या हो सकता है कि किसी और के भी साथ नहीं हुआ है, बस आपको कुछ एक खराब ड्रीम आ गया। मेनी पीपल समटाइम्स दे कॉल अस एंड से आई गॉट दिस ड्रीम और आई सॉ दिस विजन एंड नाउ आई एम fearful that what if this happens to me। Maybe it is unrealistic। So this would actually go in the basket of unrealistic fears where nothing is happening but you are visualizing it in your own mind, or something is happening in your community or in your people around, and then you are scared that what if this happens to me also। So this is unrealistic fear। Realistic fear, yes, related maybe to your business, related to your family, related to certain people around, उनके साथ में कुछ हो रहा है और कुछ नेगेटिव हो रहा है, and then you are concerned, so maybe you put that in the realistic basket। so समझ लीजिए आपके दिमाग में एक फ्लो चार्ट बनाइए। you're feeling fearful, then you have 2 steps। क्या ये रियलिस्टिक है, क्या ये अनरियलिस्टिक है। अगर अनरियलिस्टिक है तो उसको वहीं की वहीं पर छोड़ दीजिए।
अगर वो फियर अनरियलिस्टिक है, आपके साथ हो नहीं रहा और आपको लग रहा है कि आई एम जस्ट इमेजिनिंग इट इज नॉट हैपनिंग टू मी, सो व्हाट विल यू डू एट दैट मोमेंट? उस समय आप अपने आप से बस इतना सा बोलिए, यू जस्ट टेल योरसेल्फ, आई एम द सोल, आई एम नॉट दिस फियर, आई एम द सोल, आई एम नॉट दिस फियर, आई एम द सोल, आई एम नॉट दिस फियर. Just say this for about 5 to 10 times if you like, and then see the magic you will feel out of it. Remind yourself that you are the soul, और ये जो fear है ये आप नहीं है, उससे अपने आप को associate ना करें, and then just realize that this is not you, and then remove it from your system, remove it from your mind. So that is how you can very easily and in a very simple way tackle unrealistic fears. Now let's talk about realistic fears. सच में ऐसा कुछ हो रहा है, कुछ नेगेटिव हो रहा है, भाई आपकी बिजनेस में कुछ मेजर लॉस हो रहा है, या किसी ने आपके अगेंस्ट में कुछ पुलिस केस कर दिया, या कोई लॉयर आपको कुछ चिट्ठी भेज दिया है, एंड देन यू आर गेटिंग स्कैर्ड दैट हाउ विल यू हैंडल दिस सिचुएशन. नाउ हियर यू विल आस्क योरसेल्फ सेकंड क्वेश्चन. दूसरा सवाल आप अपने आप से पूछेंगे, इफ इट इज अ रियलिस्टिक फियर, दैट इज इट इन माई कंट्रोल और इज इट आउट ऑफ माई कंट्रोल? यानी कि जो हमारे साथ नेगेटिव हो रहा है, क्या उसे ठीक करना मेरे हाथों में है या मेरे हाथों में नहीं है? इज इट इन माई कंट्रोल और इज इट आउट ऑफ माई कंट्रोल? देन अगेन देर आर टू चॉइसेस. एक है कि रियलिस्टिक फियर है, यू हैव इमेजिन अ फ्लो चार्ट इन योर माइंड, यू हैव टू ऑप्शंस. इज इट इन योर कंट्रोल, इज इट नॉट इन योर कंट्रोल? इफ इट इज़ नॉट इन योर कंट्रोल, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. येस, इट इज़ नेगेटिव. लाइक फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ द COVID-19 पैंडेमिक. येस, मेनी पीपल आर fearful. इज इट इन आवर कंट्रोल? नो. इफ इट इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल, तो उसके बारे में दिन भर चिंता करके या उसके बारे में दिन भर सोच के, इज इट गोइंग टू हेल्प अस? नो. So all those things which come in the basket of not in my control, again you will do the same exercise. I am not this fear, I am the soul. I am the soul, I am not this fear. I am the soul, I am not this fear. Just train your mind कि okay, ये वाली चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है, इसके बारे में फियर करके क्या होगा? इसके बारे में फियर करेंगे तो ओनली व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, मेरी ऑरा श्रिंक हो जाएगी, ऑरा श्रिंक होगी तो इनफैक्ट ये फियर अगर बार बार सोचते रहेंगे तो रियलिटी भी बन सकता है. सो व्हाई वेस्ट आवर एनर्जी ऑन सच फियर्स? There is no point and there is no sense in wasting our energy on such fears, because it is only going to make this thought stronger कि हाँ मेरे साथ ऐसा होने वाला है. So when you realize that it is not in your control, then just keep it aside. Remind yourself that this is just a fear, it is a negative emotion, it is not me. Don't associate yourself to that fear. Second, if it is in your control, suppose कोई fear है और उसको ठीक करना आपके हाथों में है, it is in your control, then what do? Then you pray and find out solutions to overcome that. But if you still put fear in your system, even if it is in your control, तो क्या होगा जब हम लोग के अंदर fear आ जाता है तो intuition या guidance या ideas उस problem को solve करने के लिए आसानी से हमारे अंदर नहीं आ पाती है. Because that ideas are not coming, we find it difficult to come out of that situation. So if it is in your control, then you think, okay, what are the different ways? What are the different ways that I can overcome this? Alright, now even if it is in your control, here comes question number 3 given by Master in one of his Golden Lotus Sutras, where he says, ask yourself, and I just love this question a lot and many times I have reached that stage, और ये question जो है मेरे दिमाग से सब fears हटा देता है. And that question is, what is the worst that can happen? ज़्यादा से ज़्यादा क्या खराब हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या नुकसान हो जाएगा? And this is such a profound question, because बहुत बार जब आप अपने आप से पूछते हैं, अच्छा मैं इस चीज़ की चिंता कर रही हूँ, दिन भर I'm worried, दिन भर I'm upset, what am I upset for? What is the worst that can happen? I'll just give you an example. One day, like my daughter, she lost her book, and this book was given to her from the school library, and she was like just about 8 years old.
तो अब वो स्ट्रेस में आ गई, उसको बहुत डर लग गया कि मेरी लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरी की जो बुक है, आई हैव लॉस्ट इट, एंड शी वाज फीलिंग वेरी fearful. So I asked her the same questions. So I asked her, ki, what are you fearful about? She said, I lost the book. So then I asked, okay, is it realistic, unrealistic? Yes, it is realistic, because yes, she has lost the book. Then I asked her, okay, is it in your control, not in your control? So I just asked her that, is there anything that you can do? Have you found out everywhere? Have you seen all the places? So I just asked her all those things. And then she was still, she was like almost about to cry, or almost internally crying, and the tears were just about to roll. And then I just asked her that, what is the worst that will happen? Why are you so scared? So she said the teacher will scold me, and the teacher will, I don't know what will happen actually. She didn't know कि अगर book खो जाती है तो क्या होता है. And then I just went through her school diary, and उसके अंदर simple rule था कि अगर book खो जाती है then you have to pay a fine, and the fine was quite minimal, just the cost of the book. And then I just told her, look, even if you lose the book, the worst that will happen is I need to pay this fine, or I need to buy the book and give it back to the library, and I shall do that. And just a simple thing, and just her emotion just changed, and she was smiling, she was happy. तो ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, एक बच्चे की एग्जाम्पल है, बट हमारे भी लाइफ में बहुत बार ऐसे होता है कि हम डरे हुए हैं, लेकिन क्योंकि हमारा माइंड फ्रीज हो जाता है, हम लोग ये ही नहीं सोच पाते हैं कि वर्स्ट कम वर्स्ट क्या हो जाएगा. और जब हम लोग सोचते हैं कि वर्स्ट कम वर्स्ट क्या हो जाएगा, ओ इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ $200 और मे बी जस्ट अ स्मॉल प्राइस टू पे अगेंस्ट द थिंग दैट यू आर फीलिंग fearful about, then it is not worth it. It is not worth spending the whole day in stress. It is not worth spending years, sometimes months under stress, and staying in that stress for a long time. So this question can really release a lot of stress. Many times the stress that we are carrying in the system, or the fears that we are carrying in our aura or in our system, many times we have not even calculated कि अगर कुछ negative हो भी जाएगा तो क्या हो जाएगा, what is the worst that will happen. Let me give you another example. Especially in a city like Calcutta where we live, many people always have this fear, और उस fear में उन लोग गाड़ी नहीं चलाते हैं ये सोच के कि if I drive तो मेरे गाड़ी का accident हो जाएगा, accident हो जाएगा तो फिर just because accident हो जाएगा I don't drive. So there are very few women who would drive in the city, and very less people sometimes choose to drive simply because the traffic is not very organized. So I was just talking to one of my friends, or they has also done practicing courses. So he said that I'm very fearful. I'm very fearful of driving a car. So she said that yeah, it's so difficult to drive a car in our city. So I said, what do you fear for? मुझे यही डर लगता है कि अगर गाड़ी टूट जाएगी तो क्या हो जाएगा, और वो सोच के the brain becomes so frozen. So I just asked her that even if you crash it or you meet with an accident, what is the worst that will happen? And then she said, yeah, maybe कुछ fine लग जाएगा, कुछ हो जाएगा. Then I asked her, is your car insured? Yes. So even the worst come worst, people scratch your car or there are dents in the car, what is the worst that will happen? So कितना बार ये क्वेश्चन पूछने से हम लोग को क्लैरिटी आ जाती है कि हाँ, इतना बुरा भी नहीं होगा जितना हम सोच भी नहीं पा रहे हैं, सोचे भी नहीं है, बट उसके पहले ही the mind is kind of frozen. So this is the time where we need to have courage. Okay, what is the worst that will happen? The worst that will happen is, okay, गाड़ी ठुक जाएगी, कोई बात नहीं, ठुक जाएगी तो क्या होगा? I have an insurance, I can pay for it. Okay, बहुत ज़्यादा ठुक जाएगी, then we will see. But we can't stop living life. So when there is fear in the system, we actually kind of stop living life. We stop doing many things. और अगर कुछ बुरी चीज़ होनी भी है, उसके डर से अगर हम लोग बिल्कुल भी करेज अपने अंदर नहीं रखेंगे, we won't be able to live our life fully today, what we can live. So my friends, let's transform this energy and let's live life fully, full of courage. And this question actually gives me personally a lot of courage when I ask myself, ठीक है, कर भी लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा? Sometimes we even fear talking to some people. हम लोग को किसी से कुछ परेशानी है, हम उससे बोल भी नहीं पा रहे. क्यों नहीं बोल पा रहे? Why? Because हम उसको बोलेंगे तो उसको बुरा लग गया तो, उसको खराब लग गया तो. But then you're holding that emotion in your heart, in your consciousness for a long time, which is creating anxiety, frustration. Why not just go and talk about it? ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा? ओके, वो इंसान आपसे गुस्सा कर लेगा, कोई बात नहीं, आप माफ़ी मांग लीजिएगा. Many things can be done, and
ये हमारे मन का एक assumption भी तो हो सकता है कि उसको गुस्सा आ जाएगा या उसको खराब लग जाएगा. This is many times just an assumption. People often have lot of communication barriers simply because of fear. Why? Because we don't have the courage to speak out. We don't have the courage to just stand up and say that no, I don't like this, or I like this, I don't want to do this, or I want to do this. Sometimes we just lack that courage in expressing ourselves, in expressing our needs, expressing our wants, expressing that no, I like this, no, I don't want this, I want this. So, my friends, let's start with these small little things where we express ourselves with courage. सामने वाला अगर रिजेक्ट कर देगा तो आप ना कर दीजिएगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट समथिंग, आई हैव सीन पीपल दे ऑल्सो फील फियरफुल टू आस्क हेल्प. अगर आपको हेल्प चाहिए, मांग के देखिए. ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, सामने वाला ना कर देगा, कोई बात नहीं. डोंट फील बैड आफ्टर दैट. दैट्स इट. नथिंग मच टू डू. So, personally, to summarize, these three questions are very, very profound. So, the first one is ask yourself, is it realistic or unrealistic? Second one, ask yourself, is it in your control or is it out of your control, or is it not in your control? And the third one is, what is the worst that can happen? ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा? Think about this, and then you will see that as you keep questioning this to yourself, the energy of fear will start transforming to courage. So fear makes you feel stuck. And when you ask yourself, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, इतना थोड़ी ना कुछ होगा, उतना कुछ नहीं होगा, what will happen, this will not happen, that will not happen, and your mind kind of rearranges, gets organized, and this energy gets transmuted and gets transformed to courage. That then you feel it's okay, there's no harm in doing it, let me just do it, there's nothing much to lose, let me do it. Like I'm assuming that many of us here are pranic healers, or you might have heard about pranic healing. I've seen people, if they learn pranic healing, after that उन लोग घर जाते हैं और healing जब शुरू करते हैं तो उनके अंदर कभी कभी डर आ जाता है कि हम कुछ गलत तो नहीं कर देंगे. So I often ask them, अच्छा गलत कर भी लोगे, what is the worst that will happen? कुछ नुकसान तो ज़्यादा होने वाला है नहीं. ऐसा नहीं है कि आप जिसकी हीलिंग कर रहे हैं उसको बहुत नुकसान हो जाएगा या वो और बीमार पड़ जाएगा. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, that person will not get any benefit, but there's not much to lose. So why not just wave our hands and experiment and try it and be courageous to experiment and try new modalities, new things. So let's keep learning. Let's keep expressing ourselves. So think about it. आपको क्या चीज़ से डर लगता है? कुछ बोलने के पहले are you fearful? कुछ नया try करने के पहले are you fearful? So explore, try, express yourself and start with small little things. I'm not talking about major things कि जाइए आप bungee jumping करिए, or you do paragliding, or you do parasailing, few things which many people are scared of. We are not even talking about that. We're just talking about basic things, of simple things like express yourself. If you have any desire, do that. Try it. Maybe just because of courage, you're just suppressing it. If you want to do something, आपको कुछ नया business शुरू करना है, लेकिन business शुरू करने के पहले आपको डर लग रहा है कि फेल हो गए तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो आपने इन्वेस्टमेंट की है कुछ लॉसेस होंगे, कैलकुलेट देम. बट डोंट जस्ट स्टेप बैक बिकॉज ऑफ फियर, बिकॉज इफ यू स्टेप बैक बिकॉज ऑफ फियर, दिस फियर विल कीप हॉन्टिंग यू, दिस फियर विल कीप कमिंग बैक, and this fear will keep reminding you that you could not do it. So let's live life fully, full of courage. Let's express ourselves with courage, with inner strength. Thank you very much for watching. Do leave us a review and do comment on what fear do you think you realized and how will you come out of it. How will you ask yourself these questions, and do share that if you ask these questions and if it helped you to come out, do share your feedbacks with us, and this will also inspire many other people. Thank you very much. See you again.